Okay, so I am live right now. Hello, guys. Okay, so right now I'm audible, guys. Let me check also. So right now I'm audible, guys. Let me check also. Okay, that's great. So right now I'm audible. Let me shift my friend as well. So today I'm going to learn again Rust. Let me do something like what I need to do here. Let me check. ठीक है. Good. क्या हाल चाल गाइस, बताओ कैसे हो? सब ठीक है? एवरीवन इज गुड. आई होप everyone doing great. And let me do some little bit setup also. I know it's getting bored right now. Let me share to my. ठीक है. Okay, good. No problem. So yeah. Let me check. So, am I audible? Yeah. Hello. Mm-hmm. Yeah. Hello. मस्त. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. I literally don't know how to entertain you guys, but
Still I'm learning these days. Oh nice. ठीक है. I think this part we already done now. Computation part already done. Floating point. Yeah, this we didn't complete last time. Okay, so we don't explicitly assign a type to a variable, then compile a variant for one for s. Okay, got it. So yeah. So now it's editable. Okay. I think I have done this part now. I need to do this. Yeah, I also did that part as well. Yeah. Statement and expressions. This is the most important part I need to learn right now. So okay, so I'm back. X square x into x. Okay, x cube x square into x. Okay, this expression will be assigned to y. Okay, ठीक है. क्या करना है फिर मुझे? ये सही है. Look what is happening here. Like look, x assigned to 5, that is u32 type, and now we declare a y variable here, and between the curly braces we again initialize x squared, and it will be the square of x. I mean 525 x cube, something like that. Okay, but after that x cube plus x square, yeah, this is what addition we did here, and it's already done here. And but we didn't apply like this one, like semicolon. If we apply semicolon, then y value become like parenthesis. Let me show you again, I guess. Yeah, so to assign the value, we just remove this one. Okay, because this is a kind of a scope, and to assign that value to a particular scope where is a y is variable, so we don't need to put here like this one. Okay, so that's why, yeah, that's it, we understand it. So make it work with two ways. Now this was the example we need to understand, like z 2 into x, where x
should be I mean 5, but as we use here semicolon, so that's why z value become this one. Okay, if I will try to remove from here and I will do like that, then it will become 2 into 5 10. The z become 10. What the hell? Yeah, so z is 10. Okay, yeah, got it. This is the most important part. Initial, I think, to assign the value, we just remove this one. Okay, okay. Because this is a okay. Now we look what we did here. X is equal to 1. Okay, and x plus equal to, so x become 3 as well, but we didn't use this like that, so v value also become 3 now, right? No, it will give error. Oh, let me yeah, this is working right now because here addition also happening now, so that's why uh, x is not assigned to v, so we need to do like that. It's kind of return type, I mean returning here value, and we then directly assigned to x, I mean sorry, x assigned to v, so that's why it's working right. Okay. Now what is this now? Okay, I don't know the answer of that. I think it's not visible, I guess, so I need to little bit zoom here now. Now it might be. Okay, so what's the error showing here? Like this is our program statement. Okay, and what is saying like here, let so I need to remove this. That is saying like, let me check. Okay, now even I'm not understanding this. Let me clearly check first. Okay, unnecessary.
this same thing I did now. So no, yeah, so, okay. इसको तो कैसे what I can do like yeah, that's it. What I can do, I initialize a empty i32 type variable, and Rust compiler directly assign the value according to their data type. If it's integer, then it will directly assign the 0 to you. So now saying, yeah, that's a simple one. Oh, they have solution as well. So first we need to complete, then we need to check into this. Okay. I think it should work, I guess. 1 2, the sum will return this one. Okay, let's check. Yeah, I need to work. That's why I didn't find any. Let me check solution as well, I guess. Basic type, I guess. अरे तो ये ब्रो करेंगे भाई, 1 मिनट रुको। मेरे यार सॉरी गाइस, लगता है टोटी भाई यहाँ भी आ गया है। टोटी भाई यहाँ भी आ गया, टोटी भाई। ओके, क्यों हाँ, ये भी तो ऐसे भी तो कर सकते थे इसे। हाँ, इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, बिल्कुल। ठीक है, इंडेंटेशन वैसे ही मैटर नहीं करते हैं। लेट्स सी, गुड। हाँ ठीक है, हो गया कंप्लीट दिस वन। Functions, okay. Don't modify the following 2 lines. Which one? This we don't need to like that. Okay. Okay, so look, this is the function. Look how we define in our Rust, like fn keyword and the name of function, and yeah, we're taking parameter and defining type. Okay, so it will throw the error of this type, then after that return type. Okay, let me run this.
Yeah, look, first error this one, which type. So let's say I'm expecting one, so by default it's I32, that inferred by the Rust compiler, so I'm putting here. Or then after that, okay, now after that what it will give, it will give the next error will come like this function not returning any, there is no type of return here. Okay, let me rerun this again. कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है. हाँ, so this one, okay. Now look, we didn't mention here like this function need to split that particular data type. Okay, so by default it gives this one parenthesis. Okay, so to run this we can do this like that, like because there is no type of return type data. Okay, so by default it will give blank parenthesis. So let me check. Yeah, it will work. Or if you want to make it work, like let's say if you want to make it 3, okay, sum, so we need to do like this. Okay, if look, we can do like that also, return. Okay, if you don't want to mention return keyword here, okay, just do that. It means the function returning this I32, but still it will give error because we need to get I32. Okay, now it will return here. Yeah, it's working right now. Whether to return the output, you can use this. Okay, it will also work here now. Or if you don't want to use return keyword, then you can directly use that. Okay, okay, let's move to next one. Move to ठीक है, डायरेक्ट पेंट करना. Solve it in 2 ways. Don't let println work. Okay, मतलब implement this function, don't modify the fn signature. मतलब देखते हैं क्या है. इसको कैसे करना भाई, ये तो मुझे खुद समझ नहीं आया. ओके यार, आज मैं कुछ थोड़ा टेंशन में था कि जिस देश में मोदी जी नहीं होंगे उस देश का क्या होगा. बिकॉज द रिसेंटली ट्रम्प, आई मीन यूएस, did a strike on Venezuela and they caught their president Maduro and his wife as well. You know, America is
kind of doing abuse of power, like if they find any, because Venezuela is very have like crude oil, mm, mm, in comparison to Arabic country as well, so I have mm, mm, very higher quantity of crude oil in there, so that's why when US smells something like oil, they try to destroy that country as well. That's how power works. That's how US is great, but in a bad way. क्या करना भाई इसमें, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा. सिग्नेचर मीन्स नेम होता है क्या? फंक्शन सिग्नेचर मीन्स, अरे yeah, exactly. So hi there. Diverging function never return to the caller, so they may be used in place with a value of any type expected. डाइवर्जिंग फंक्शंस क्या होते हैं? डाइवर्जिंग फंक्शन क्या होते हैं कि क्या होते हैं, एक मिनट रुको. Let me open my Twitter as well. I know it's getting bored right now. Oh shit. Sorry. Okay, let me complete this first. एक मिनट चेक कर लेता हूँ. Oh my god, Millennia is, oh shit. Why is Melania coin is increasing, soaring right now? Like a Chicago and the feeling. Okay. Another one, okay, but the feeling.
एक मिनट रुक जा भाई, ट्रेड ले लेता हूँ। लेट्स सी, देख लेते हैं। I'm checking a little bit about the crypto coin as well. Checking what is happening. Chicago and the feeling. अरे यार, भाई ज़्यादा ही हो रहा है क्या? Okay, so I need to check WLFI. This is a World Liberty Fund institution that is backed by Trump and his family. They do very shady stuff in crypto as well. I mean, they are earning lots of money, and that retailer like us losing so much money in that. But what we can do? It's a lalach by lalach. It's already, it need to go this. What is 0.18, right? There is no liquidations. Oh shit. Okay. Okay, now let me check Trump as well. Trump coin. I don't know. This is the measurement of like we need to take trade of that. You need to do it on your risk, your own risk, on your risk. Yeah, not a financial advice, guys. Okay, so this is cross this liquidation point. Okay, and after that it will coming down right now. Okay, so how about the WLFI then? That's good. It should be go like that 0.18, right? If it goes 0.18, then I will need to check that. It's okay. Go. क्यों ना हम तो चले टेढ़े मेढ़े से रास्तों से नंगे पाँव रे चल भटके ना बाबरे.
Donald Trump say US will be very much involved in Venezuela oil industry. Okay. Typical. Typical US. When they smells any oil in other country, they just try to create narratives like you need to be free from your own government and we can help you. They just then after that they strike at their place and exploit that country, take all the resources and they leave this like that, like they did with Iraq, Libya, Afghanistan also. Now they're doing with Pakistan as well. Okay, yeah, just almost is like that. Let me check Harvard as well. Not to feel it, another world of me as memory. ठीक है, let's go guys, let's not deviate from our main goal. Rust, exactly. Okay, so where was I? Let me check also stream as well. Now also do let me know am I audible or not. I know I am the only one guy that watching my stream as well. Okay, so okay, so ठीक है, एक एक लास्ट टाइम देख लेता हूँ. ठीक है, एक एक लास्ट टाइम देख लेता हूँ. Diverging function, okay, never return to the caller, so they may be used in place where value of any type is expected. Okay, get option is okay. क्या आई है, मतलब कुछ समझ नहीं आई. ओए ये क्या है? Let me check this solution as well. Look, no, before before seeing the solution we need to do this. We need to complete this. Okay, fill in the blank, match B. Okay, match B. Okay, अगर ये ट्रू है तो 1 आएगा. अबे ऐसे कैसे?
ठीक है, समझ गया। लोग इसमें क्या हो रहा है कि हमने बी को एक ट्रू ले लिया, ठीक है। अब मैच करेगा, मैच करो बी को, अगर बी ट्रू है तो ये डालें और यहाँ पे डाइवर्जिंग फंक्शन डालना है। यानी कि डाइवर्जिंग फंक्शन क्या होता है, जब भी नेवर रिटर्न ट्रू सो दे मे बी यूज्ड इन प्लेस वेयर वैल्यू ऑफ एनी टाइप इज एक्सपेक्टेड। ओके, करेक्ट। तो let's say let me create a function here. Okay, it's a option, ठीक है। yeah, false, sorry, got true. got the true value. I think this might be, and I need to call this here. This kind of function. So I don't know. But why is it there, right? Still not answer. Node collection. These are the type of function, I guess. Yeah. So yeah, this one function. Yeah, exactly. This thing here, I guess. हाँ, मैंने फाउल से किया था, लेकिन ट्रू के केस में मैच फ्रैक्शन। ओके, ठीक है। तो यानी कि मैंने फोर्स किया था, ठीक ही था वो, आई गेस यही आंसर था। ठीक है, दिस इज द डाइवर्जिंग फंक्शन। चलो कोई, वही स्विच केस है लाइक मैच, पर इस केस में हमें स्विच करना है। मतलब पहले मैच करो कि बी में हमें कुछ करना है कि अगर it's kind of like pick the b and try to find if it's true then it will give 1, if it false then it will print success and panic here. Panic means it interrupt the whole execution of program. So yeah, this like that work, I guess. Yeah, okay. Okay, got it. ठीक है, समझ गया। This is supposed to be run like that. So yeah, this is right one. Let's move to ownership and borrowing. Okay, it's running or not, let me check. ठीक है, got it. ठीक है, ठीक है। So yeah, so in Rust there is no garbage collection. Okay, no garbage collector. Okay, so as a programmer, or might be the half job done, I mean not half, then more than half job done by the Rust compiler itself. Like when you write a program in Rust, तो जो कंपाइलर होता है वो बताता है कि आपने कि इसका टाइप ही होना चाहिए था, ठीक है, इसका स्कोप ऑलरेडी से बाहर आ चुका है, तो आई मीन वो कंपाइलेशन के टाइम एरर दे दें, आई मीन बिफोर द एग्जीक्यूशन। सो या
So that's a very good thing or also bad thing, because it takes I mean Rust take too much time to develop. I mean Rust, like if you want to develop something in Rust now, so it will take too much time, because we need to take care of that, even because compiler always throw the error, so we need to correct that first before execution. So yeah. So okay, let's move to the next one. So what is ownership? Let me read first, then I will try to um, explain in layman language. Okay. Okay, so programmer have to manage use. ठीक है, ownership is set of rule that govern how a Rust program manage. ठीक है, so ownership क्या होता है कि mostly memory को manage करने के लिए होता है. All program have to manage use computer memory by running some language of garbage collection that regularly looks for no longer use memory as the program runs. Okay, so in other language program must explicitly allocate the free memory. So this line like uh, okay, let me tell my real scenario incidents, or let's say example. Oh, okay, so I worked in image processing related project. Okay, so we were trying to processing like let's say single image around 2 to 3 GB. Okay, so we will processing that image via OpenCV, that is a library available in Python. Okay, and the program language obvious it's Python. So what was happening like when I try to read the whole image in OpenCV. Okay, and mm, yeah, so let's say x, let's say I'm assigning a x variable. Okay, and and I have read that image via OpenCV, so x will store that binary image. Okay, that, so even uh, even उसका जो स्कोप है ना, आई मीन जो एक्स वेरिएबल है, इवन दो आई हैव exit that function, still that the memory already allocated to, I mean that binary image kind of that memory कैसे बोलूँ, let me समझाने दो मुझे. I am talking about the like why I am talking about this, like in other language explicitly allocate the free to free the memory. So sorry, so let's say x is a OpenCV. I don't know the exact method, but kind of like that. And yeah, and excuse me, any.png. Okay, okay, so now x store the binary image. Okay, though, and let's say sorry, sometime क्या होता है कि देखो x ने इस इमेज को स्टोर करके रखा है, और जो पाइथन में क्या होता है, जो गार्बेज कलेक्शन होता है वो बिहाइंड द सीन रन होता है. वो गार्बेज कलेक्टर होता है क्या, इट्स बेसिकली अ प्रोग्राम दैट रन बिहाइंड द सीन. I mean, let's say if you have Python interpreter, whatever we are using in, I mean Java also, JVM also there, and Python has a Python interpreter itself. So what it does, like a garbage collection run behind the scene. Okay, and it will look out the all variable that are not in use. So you try to free up that memory. Okay, so I was also thinking like that like x storing that image also it could be free. Okay, but when I try to do stop in my, let's say when you do stop
in terminal. So you will see the let me show the okay let me show the to say mm, ओके अब छोड़ो उसका भी छोड़ो, क्योंकि टर्मिनल में एक स्टॉप कमांड होती है, तो हम उसमें मतलब चेक कर लेते हैं कि भाई मेमोरी फुल है कि नहीं। तो उसमें क्या हो रहा था कि रैम पूरी फुल हो चुकी थी, ठीक है, और हम ऐसे हो रखे थे कि भाई ये रैम फुल क्यों होगी है। तो वो तो अब फिर वही है, हम हमें लगा कि जो ये एक्स है ना, एक्स माइट बी इन यूज्ड, आई मीन एक्स इज नॉट फ्रीड बाय what do you say garbage collector. So what I did, like I did try to, I mean I did not try, I just try to, अरे मतलब मैंने वेरिएबल को डिलीट मार दिया using this thing. Del is a keyword and it delete the variable, and whatever data it holds also vanished. So it is what we did here, like explicitly uh, try to free up the memory. So it's a programmer headache, but so this is it line explained, like in other language programmer must explicitly allocate the free up the memory. So yeah, nobody watching right now, but okay. Nobody will come here. This is my yeah, by Joe, other one will not uh, other one will not join this session, because I am just doing for myself and learning programming language as well. So that's why if you want to watch that what to say live now, so that will be done on separate channel. This is my personal channel, so yeah. This is I'm doing for myself, so that I can learn and grow more as well. If you want to ask something uh, if you want to ask something related to programming, I can teach you, or we can learn as well. Might be I don't know, but I can search on internet and you can get the whole answer. Yeah. So I don't know when did you not remaining trainers. For the fun YouTube live, you need to follow other channel, but this is for programming only. Yeah. So where was I? Let me do this. Okay. So Rust uses okay. So so इसका मतलब यही था. It's meaning like programmer need to take care, like which variable holding the huge amount of data, so we need to free up that memory, like I use in Python using a del keyword. So but we Rust do not, in Rust we do not care about, because before the execution we need to take care about. And how would we know that memory is managed or not? Because the Rust compiler do the job for us. Rust uses a third approach, that memory is managed by system of ownership with the set of rules. So जो whatever I told you na, like Rust compiler do this thing. So the compiler have some set of rules, okay,
uh, which we called ownership, that compiler say, yeah, it's already mentioned here. So if any of those rules are violated, program won't compile, so none of the feature of ownership will slow down the program while running. Yeah, it's okay. So I hope you get this thing. No, when you understand ownership, you will have a solid foundation for understanding features. Okay, ठीक है भाई. एक in programming there is two thing we need to always need to think about: stack and heap. Okay, so first I need to read this, then I will let you know what is stack and heap, what I understand. If I am wrong, so please try to correct me as well. So whenever do not require you to think about the stack and heap very often. Yeah, exactly. Like I'm using Python now, so we do not to take care about the heap, because mostly things are stored on private heap that is managed by Python memory manager itself. So but in Rust we need to take care about that. But in a system program like Rust, whether a value is on stack or fact how the long language behave, why you have to make certain different part of ownership will describe in relation to stack. ठीक है भाई, स्टैक और हीप के बारे में समझ लेते क्या है. Both stack and heap are parts of memory available to your code to use at runtime. Let me join this stream. Because this is for programming. This is boring. That's why they won't join. Doing this myself. ठीक है, तो क्या था, हम स्टैक और हीप की बात करने वाले थे. तो स्टैक एंड हीप आर पार्ट ऑफ मेमोरी अवेलेबल, सो बोथ आर पार्ट ऑफ मेमोरी. ओके, जो स्टैक होता है ना, अब चलो एक बिल्कुल सीधा सीधा आंसर बताता हूँ. स्टैक और हीप होता है क्या? जो स्टैक में जो डाटा स्टोर होता है ना, वो थोड़े स्मॉल टाइम, क्या बोलते हैं यार, कुछ देर के लिए स्टोर होता है. वाइल हीप में जो डाटा होता है ना, वो डाटा परसिस्ट करता है. I mean have a longer life in comparison to stack. Okay, yeah, that's what we can understand. And जो stack होता है ना, उसका जो size होता है वो फिक्स रहता है, let's say. and जो heap होता है ना, वो क्या होता है, पूरा expandable होती है जो memory होती है. so that's why stack is very faster in comparison to heap. Okay, but they are structured. The stack store value in order to get them and remove the value in a opposite order. Okay, last in first out. Okay, so yeah, वो ये stack of plate होते हैं. like this is stack, like this one. ठीक है, जैसे stack है, sorry, not this one. let's say मैं बताता हूँ stack क्या होता है. what is stack? look, let's say this is a container. okay, so first this, let's say this is second plate, third plate, fourth plate. so इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या बोला गया है कि रेफर टू लास्ट इन फर्स्ट आउट. इसका मतलब क्या है, the recent one added plate. okay, this one it will removed first. okay, after that this one, and the हाँ, और जो फर्स्ट टाइम जो ऐड हुई थी ना, उसको फिर रिमूव कर दिया गया. तो बस यही है, तो यही स्टैक होता है. दैट्स अ सिंपल थिंग. सो
like देखो इसमें एग्जांपल है, when you add more plate you put them on top of pile and when you need a plate you take one of the top. So adding or remove plate from middle or bottom what work. हाँ तो वो सिंपल सी बात है, we can't remove from directly this, we need to first remove this and this and this and so on. Okay, so adding or removing, pushing on stack and removing data is called popping. So all data stored on stack must have non-fixed size. Look, I already told you, na. Let's say if I'm creating a stack now, so I need to know like how many plate it can contain, like 1 2 3 4. So it need to be I need to give a fixed size, like this is a container, it need to be hold 4 plates. So yeah. So data within unknown size, compile time size might change, must be stored on heap. So heap में क्या होता है कि the heap you consider heap another type of container which is like this. I don't know, might be it could be you can store many plates here. Okay, and it could be random, not like this. Okay, not in a particular order. So yeah. Yeah, ठीक है. आवाज़ क्यों नहीं आ रही? My voice is coming or not? ठीक है. My voice is coming or not? ठीक है. सो या सो फिर कहा था जो हीप होता है लेस ऑर्गेनाइज होता है, जो कि हम ऑलरेडी टोल्ड यू देयर, लाइक इट्स नॉट इन पर्टिकुलर ऑर्डर, इट कुड बी एनी टाइप ऑफ, so there is no order of that. When you put data on heap you request a certain amount of space. Okay, the memory allocator find an empty spot in heap that is big enough, mark it as a being in use and return as a pointer. Okay, that's good. So yeah, oh sorry, which is the address of that location. This process is called allocating only, no, sometime everybody is allocating. Okay, take it. Pushing value to stack is not. The pointer to be fixed size, so you cannot store the pointer. So you can put when you want to actual data you must follow the pointer being seated as a restaurant. So ठीक है. So when you enter you state the number of people. ठीक है. Pushing to stack. Oh देखो जैसे इसमें बोला कि pushing to stack is faster than allocating on because. हाँ अब देखो मैंने ये क्यों बोला था. ओके वेट कि जो ये चीज़ है ना, ये जो स्टैक है ना, इसमें क्या होता है कि ओनली मतलब एक तो फिक्स टाइप ऑफ डाटा होता है, ठीक है, और नहीं उससे समझोगे किससे समझोगे, मैं बताता हूँ आपको. लेट्स से दिस इज़ अ हीप. ओके, हाँ इसको भी ऐसे बना लेते हैं तो थोड़ा सा नहीं रह जाएगा, तो कॉन्टेक्स्ट भी थोड़ा क्लियर सा रहेगा. सॉरी. Okay, so let's say this is heap. Okay, let's say I'm storing Deepak house. Yeah, and
एक काम करना, इसका एग्जांपल यहीं पे होगा, मेरे को ड्राइंग में बनाने में दिमाग ख़राब हो जाएगा। चलो बना ही देता हूँ यार, फिर बोलोगे कि क्या बकवास कर रहे हैं। ओके, एंड लेट्स से नो, ठीक है। और इस पर क्या करना है कि जो ये चीज़ है ना, एड्रेस ऑफ दीपक हाउस, ठीक है, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ स्टैक and this is pointing to it. Okay, this is the actual Deepak house and this so in this scenario, whenever we write to data to heap na, first we find whether there is a empty slots. I mean it try to find the empty slots. Okay, okay bhai chalo, let's say there is a scenario I want to create a Deepak, I mean mine house. Okay, for let's say heap is a country and we need to find the empty slots. Okay, so let's say I established my house here. Okay, and after that I need to store its address as well. So that address will be stored in stack, this one, this is the, yeah, this is the stack, ठीक है। और या सो स्टैक में क्या होगा कि जो ये एक्चुअल हाउस है ना, इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा। ओके, सो यहाँ पे दो प्रोसेस हो रही हैं, पहले तो यहाँ पे जाए, ठीक है, फिर क्या करोगे, इसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होगा, ठीक है। तो ये हीप के केस में होता है, जब हीप में डाटा स्टोर होता है, तो दैट्स वाई इट इज़ आई मीन फाइंडिंग द एम्प्टी स्लॉट्स, ठीक है। आफ्टर फाइंडिंग देन put that data that slot, and then after that I need to put its pointer in a stack as well. Okay, I mean stack is a memory, also heap also memory type. So yeah, so that's why heap is very slower in comparison to stack. Look, pushing to stack is faster than allocating on a heap because the allocator never has to search for place to store new data, of course. Let's say, and if you are, let's say if you forget the heap and if you try to put data on stack, don't need to care about the like finding the empty slots in that, because we know the stack has a fixed size of and we need to, before putting that stack already created, and need to shove that data into it, and we don't need to care about the pointer as well and the actual data as well. So that's why it is very yeah, faster. So that location always top of stack. Comparatively, locating space on heap require more. हाँ, look, जो मैं बात कर रहा था कि comparatively allocating space on heap require more work because the allocator must to find the big enough space to hold data and then perform bookkeeping to prepare the next location. Yeah, same. So accessing data is generally slower accessing data on stack because you have to follow pointer to get there. Contemporary processor are faster if the jump around less. In continuing the analogy, consider a server at a restaurant. ठीक है, इतना समझ। Okay, that is more important. Let's say when your code calls a function, the value passed in function including potential pointer to data on heap. Okay, and the function local variable. Okay, हाँ, जो फंक्शन के जो लोकल वेरिएबल होते हैं ना, वो गेट पुश्ड ऑन स्टैक व्हेन फंक्शन इज ओवर, दोज वैल्यू गेट पॉप्ड ऑफ स्टैक. ओके, सो या keeping track of what parts of code are using what data on heap, minimizing the amount of duplicate data on heap and cleaning up the unused data on, so you don't have to. So once you understand ownership, you won't need to think about the stack keeper very often. ठीक है, ठीक सिंपल है तो, ठीक है भाई, बट वो एरिया में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ना डाटा के डिफरेंट टाइप के बेसिस पे पता चल जाएगी कि कौन सा डाटा हीप में होगा और कौन सा वो होगा. ठीक है, ओनरशिप रूल चेक करते हैं. फर्स्ट लेट टेक अ लुक एट ओनरशिप रूल. कीप दिस रूल इन माइंड एज वी वर्क थ्रू एग्जांपल. ईच वैल्यू इन अ रस्ट हैज एन ओनर. ओके, ठीक है भाई, कोई भी वैल्यू है, देयर कैन ओनली बी वन ओनर एट ए टाइम. ठीक है भाई, व्हेन द ओनर गोज आउट ऑफ स्कोर द वैल्यू विल बी ड्रॉप. ठीक है भाई, देखो रस्ट में जो भी वैल्यू होगी उसका एक ओनर होगा. ठीक है, और एट ए टाइम पे सिर्फ एक ही ओनर होगा, ओनली सिंगल ओनर एट ए टाइम. एंड
जब ओनर गोज आउट उसको तो वैल्यू विल बी ड्रॉप्ड. ओके, ठीक है भाई. देखो रस्ट में जो भी वैल्यू होगी उसका ओनर होगा, ठीक है. और एट ए टाइम पे सिर्फ एक क्यों होगा, ओनली सिंगल ओनर एट ए टाइम. जब ओनर गोज आउट उसको तो वैल्यू विल बी ड्रॉप्ड. ओके, ठीक है भाई. ठीक है, चल एक बार थोड़ा ये पढ़ लेते हैं. ये थोड़ा थोड़ा अरे भाई बहुत ज़्यादा है, तो इतना तो नहीं पढ़ पाऊँगा मैं, दिमाग ख़राब हो जाएगा. वैसे तो मैंने पहले पढ़ा हुआ लेकिन मैं भूल गया हूँ आई थिंक. चलो ठीक है, देख लेते कोई. चल थोड़ी से ना, थोड़ा सा अपने आप को ही प्रचार कर लेते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ. अरे इसी में कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है. ओके गाइस, दिस इज़ माय ट्विटर. Look guys, everything is trending. No, not everything. I mean, Venezuela is trending on Twitter as well. The Venezuela has oil, Greenland has rare earth mineral, accumulation is only volcano accumulation, wherever is cricket. ये लो, ट्रम्प खुद ही बोल रहा, बताओ. ये लो भाई, ट्रम्प का एक सोशल मीडिया मतलब खुद का है, जैसे एलोन मस्क का ट्विटर है, डोनाल्ड ट्रम्प का भी एक ट्रूथ सोशल करके है, तो वो मोस्टली वहाँ पे पोस्ट करता है. और ये है वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, द ऑलरेडी कॉट बाय यूएस आर्मी. I mean, look at the power the US has. It can invade any country directly. If it sniffs some oil, na, I mean smells oil. Classic US. I mean not a oil. I mean that's a resource also. It's very useful as well. So that's why. Look what he's saying. By comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And as everyone knows, the oil business in Venezuela. Oil reserve, biodiversity, everything. I think. Oh my God! Look, Venezuela has, I mean, lots of resources, and still it was like hyperinflation in that country as well. I just read in that news. I don't know about. I mean, not I'm also deep into that, but I know just little bit about that. And why everyone saying like first AI war have begun? I think there is a in US na, there is a company Palantir. Let me show what it does. Might be, you know, Palantir is so what Palantir do na? Palantir is a company, you know, you won't believe. I mean, it's a shocking or also irony as well. Like Palantir first investor were itself CIA. I mean, they do around $2 million around 2003, I guess. And what do they do? Like they kind of analytical platform.
Guys, remember brand monitoring. No, I won't say that much, but like that. But it's way beyond that monitoring platform. Like it has lots. I mean, Palantir have, let's say, they have a security clearance. I mean, they can access any data. If any American people they have, okay, they ingest into their AI models, and they do some analysis. Like I mean, they do descriptive analysis and the predictive analysis. Let's say predictive analysis means, let's say Palantir have a particular person data. Okay, let's say he's spending too much on credit card. Okay, so he can do analytics on that and can find like what he going to do next. Okay, so that's kind of Palantir too. And so they are uh, monitor every things in that. So like look, and mostly they do work for defense. I mean militaries. Right? So I think Palantir did a great job here. I mean they also help in to capture Osama bin Laden as well, and Palantir have done that. I think they have a cool name also. Look, they have lots of product like Gotham, and Gotham it's their product. What it does, like weapon system. Like they have a cool UI as well. I know this is only they can do, yeah, global decision making, orchestrate combat power. They can track any combat. They do. I mean, they also involved in drone related something. Look, soldier AI powered kill chain is for integrating target identity with target effector pairing. Okay. They also shows the demo as well. Damn it. I know it's a look. They talk about enable autonomous tasking of sensor from drone to satellite based on AI driven rule manual input from. Okay. So they can track any satellite. I mean they provided dashboard for that also. Yeah. So I think Palantir is going to be a very successful company. I mean, though it seems like a evil company, but let's say for the security purpose, it could be a very good company. Yeah, look, just because of that, the Palantir stock also 5.6% side. Yeah, tumble. The fuck. Look, Palantir stock price. Let me show you why it's soaring within past couple of. I mean, today's 5%, but if you check about this, oh my god, I know. Yeah. Look, in 2024, it's a $17, 13.4, and look at the graph. I know market requires some correction as well now. I mean, 5 years 612% is already. Oh, that's the power of Palantir. Yeah. And guess who is the, I mean, Palantir co-founder as well. Let's check also. Peter Thiel. This is the also. Look, I think you need to find out. PayPal. Also, yeah. These guy too. I mean, he is the CEO, Alex Karp. Peter Thiel also very prominent person in Silicon Valley. I mean, everyone admire him, but not these days, just because of Palantir as well. ठीक है.
So this was I talking about right now. No? So they are mostly heavily invested. I mean, they are using mostly AI. So that's why everyone's saying like the first AI war have begun just because of AI. Yeah. So I don't know how will China will react on that because China mostly get its crude oil from Venezuela. But Trump said like now they have a good relationship with China, so they don't won't get affected that much. I don't know, but who knows? And China also try to uh, put a foot on Taiwan as well. You know this happening in real life now. In I would say And today he said he's not concerned about anything happening to him in the aftermath of this operation. So just what your message is Well, about he that. has cocaine mills. He has factories where he makes cocaine. And yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine. They're sending it into the United States. So he does have to watch his ass. look how they talk. I mean, the freedom of speech. I mean, president do I mean use don't yeah, use this type of word. I mean, this is very normal, right? But they have lots of freedom. I mean, they can invade any For a country. long period of time, they were pumping almost nothing by comparison to what they could have been pumping and what could have taken place. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil. Oh shit! What is this drone? Why is talking about this drone? Let's check, guys. I'm also interested in this type of things as well. Hmm. Okay, so Lockheed Martin. Okay, this type of drone, but it's not look like that, right? Mhm. It's like a B-2 bomber, right? Hmm. So are we in World War right now? I don't know. What is happening to market as well? Let me check. जाऊंगा कहाँ मैं तो हूँ यहाँ, मेरी राह तो दिखाई दिए
से चलो ठीक है यार, कर लेते हैं काम। ठीक है, सो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं इसे। क्या है, अरे यार बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है भाई, ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल ऑफ ओनरशिप। ऐसे रेफर टू द स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है भाई, वेयर द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग इज हार्ड कोड इनटू टेक्स्ट ऑफ आवर प्रोग्राम, द वेरिएबल इज वैलिड फ्रॉम पॉइंट एट व्हिच इट डिक्लेयर्ड इन द एंड ऑफ करंट। ओके हैं, ओके सो ये बोल रहा है कि जो इसका स्कोप है ना ये यहाँ तक रहेगा। इस अगर इससे बाहर आएगा ना तो एस वैनिश हो जाएगा, नो लॉन्गर वैलिड। ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड ए डाटा टाइप दैट इज मोर कॉम्प्लेक्स दोज वी कोड इन डाटा टाइप सेक्शन। डाटा टाइप सब like the type covered previously are known so can be stored on stack and pop up stack, but when their scope is over we can quickly trivially copy to make new take independent instance stack, but we'll consider part of string. तो string is खुद एक data type है relate to ownership this aspect। so देखो जो ये देखो, जब हम स्ट्रिंग ऐसे डिफाइन करते हैं ना, मतलब स्ट्रिंग कोलन कोलन फ्रॉम, सो ये हीप में स्टोर होता है जाके कोलन। सो यहाँ पे हम क्या ये कोलन कोलन मतलब कि जो स्ट्रिंग है इसके अंदर कोई फंक्शन है फ्रॉम जो कि कुछ पैरामीटर लेगा, मतलब स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए, तो आर्ग्यूमेंट सॉरी, देन यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ नेम लाइक स्ट्रिंग फ्रॉम विल डिस्कस सिंटैक्स। ठीक है, अब देखो ये म्यूटेबल बना दिया, इसमें पुश मार दिया, वही अपेंड कर दिया स्ट्रिंग में। ठीक है, तो डिफरेंस है स्ट्रिंग म्यूटेबल बट लिटरल कैन नॉट। ठीक है, ओह माय गॉड, इट्स ओके। इन दिस केस स्ट्रिंग द कंटेंट एट्स कंपाइल टाइम सो द टेक्स्ट इज हार्ड कंटेंट। छोड़ो छोड़ो इसको भी, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, मैं बताता हूँ क्या। ये वाला पढ़ते हैं। मल्टीपल वेरिएबल कैन इंटरेक्ट विद सेम डाटा डिफरेंट टाइम। ठीक है, एक्स 5 ठीक है, वी कैन प्रोग्रेस दैट डूइंग बाइंड वैल्यू 5 to x, मेक a copy of value in bind it to y, we know। ये बोल रहा है कि जो S1 है ना, अब मैंने क्या बोला था, स्ट्रिंग टाइप है तो ये हीप में स्टोर होगा जाके। तो यहाँ पे ना दो मेमोरी यूज होंगी, एक तो हीप और एक जो इसका एड्रेस होगा। तो अब इसने क्या बोला, दैट इज अ सेकंड लाइन वुड मेक ए कॉपी ऑफ वैल्यू इन S1 एंड बाइंड इट टू S2। अब ये क्या बोल रहा है कि मतलब एक कायदे से होना चाहिए था कि जो S1 की वैल्यू है ना, मतलब एक तरह से कॉपी हो जानी चाहिए, मतलब सेपरेट हेलो S2 के लिए भी होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। तो इसने क्या बोला कि स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ऑन लेफ्ट a pointer to memory that holds the content of string and a length and capacity। ठीक है, तो अब देखो जो ये हेलो ना, ये आपका क्या है, ये हीप है। ठीक है, और ये आपका क्या है, स्टैक। तो जो हीप में तो क्या एग्जैक्ट मतलब हेलो है तो इसका इंडेक्स होगा, ये होगा। ठीक है, और जो स्टैक है ना वो क्या क्या स्टोर करता है, एक तो इसका पॉइंटर कि भाई कहाँ कहाँ पे है, लेंथ कितनी और कैपेसिटी कितनी है इसकी, बस ये स्टोर करता है। The length is how much memory in bytes the content of string are currently using। ठीक है, the capacity is total amount of memory in bytes। ठीक है, तो ये वो वाला है कि ये बोल रहा है कि कितना लोकेटर ने इसको दी है और एक्चुअल में कितनी लेंथ है उसकी। कुछ हुआ है क्या? तो ये सीधा सीधा सही साबित।
ठीक है. When we assign s1 to s2 string, data is copied, meaning we copy the pointer. So जब हमने s1 को यहाँ पे असाइन किया ना, इसमें ये नहीं हुआ कि ये अलग से ये चीज़ अलग से क्रिएट होगी, नहीं. इसमें क्या हुआ कि s2 अलग से पॉइंटर बन गया, और बट वो सेम डाटा को पॉइंट आउट कर रहा है, बस ये हुआ है. ये मैं लिखा भी हुआ है. ठीक है. ऐसे नहीं होता भाई, ये बोले गलत है, क्योंकि ये ना बहुत क्या होता है, एक्सपेंसिव ऑपरेशन होगा. एक्सपेंसिव कैसे होगा कि भाई इसको कॉपी करो, फिर लोकेटर क्या बोला, हीप पे स्लॉट्स फाइंड करेगा कि विच आर एम्प्टीड, देन वो शव करेगा डाटा, देन फिर पॉइंटर उसको अलग से करेगा, बस यही है. तो जैसे इसका ना ये एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, ऑनलाइन रस्ट. देखो इस केस में क्या हुआ कि अगर मान लो प्रिंट s1 को प्रिंट करूँगा ना, तो ये एरर देगा. क्यों देगा? देखो मैंने क्या बोला था, अगर हम दो वैल्यू हैं, इसमें एक तरह से कॉपी हो गया. जो s1 है ना वो इसको पॉइंट आउट करेगा, लेकिन s2 भी इसी को पॉइंट आउट करेगा, नहीं कि इसको कोई सेपरेट डाटा क्रिएट होगा. ठीक है. तो क्या होता है कि अब जैसे मान लो कि फ्री अप करना है हमें मेमोरी को, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा कि पहले s2 भी सेम इसको फ्री करने की कोशिश करेगा, s1 भी इसको फ्री करने की कोशिश करेगा. तो ये ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, और इस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं रुको मैं बता देता हूँ, क्योंकि वी नीड टू नो टर्मिनोलॉजी एज वेल. दैट लीड टू मेमोरी करप्शन. ठीक है, इसे डबल फ्री एरर बोलते हैं. तो रस्ट ने क्या मतलब मेथड फाइंड आउट किया कि इंस्टेड ऑफ डबल, आई मीन टू अवॉइड द डबल फ्री एरर ना, वो क्या करते हैं कि s1 को वैलिड एक तरह से वो प्रेफरेंस मान लेता है. ठीक है, जैसे मान ले s1 को मैंने यहाँ पे कर दिया ना, तो s1 की वैल्यू ना यहाँ पे मूव होगी, और ये फ्री हो गया अब यहाँ पे, समझे. अब s2 ही का डाटा होगा, अब ये एक तरह से s1 की वैल्यू ख़त्म होगी. मतलब जो s1 है ना, एक तरह से मतलब s1 का जो डाटा है ना s2 में चला गया. ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसको, चल के बताता हूँ. ये थोड़ा सा नीचे आते हैं. अब यार हैंग हो गया है. अरे यार शिट. हाँ देखो मैं क्या था, s1 था, फिर s2 इजिकल टू s1 कर दिया. ठीक है, अब जैसे मैंने s2 इजिकल टू s1 किया ना, तो ये जो वाला पॉइंटर है ना ये हट जाएगा. अब क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट इसी को मूव होगी है, तो ये कहना चाह रहा था मैं. ठीक है. ठीक है, just will run the draw function and it's if we do not want to, if we do want to deeply copy heap of data, then what
जस्ट टैग डाटा वी कैन यूज ए कॉमन मेथड कार्ड क्लोन। अब देखो जब S1 इज इक्वल टू किया था तो वही 2 पॉइंटर और सेम डाटा, लेकिन अगर हमें पूरे ही सेपरेट हो चाहिए तो क्लोन करना पड़ेगा। देन इस केस में S1 भी वैलिड रहेगा, S2 भी रहेगा। ठीक है, दैट्स इट। लेट्स इसका कम चलो वहीं पे कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे S1 तो प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि जो S1 की वैल्यू डायरेक्ट इसमें मूव होगी। तो अगर मैं इसको ऐसे कर देता डॉट क्लोन, तो हाँ देखो प्रिंट हो रहा है हेल, ये तो वो दिखा रहा है कि ठीक है, वो तो मेरे यूज में नहीं इसलिए बोल रहा है। तो अब तक डायरेक्ट प्रिंट हो रहा है। अगर मैं विदाउट क्लोन के करूँगा ना तो क्या करेगा कि S1 पॉइंटर को हटा देगा, ओनली डेटा सेम रहेगा। बट ये देखो एरर दे दिया, इतना कहीं प्रिंट ही नहीं हुआ है तो यार। ठीक है भाई। ठीक है, stack only data copy. There is another wrinkle we haven't talked about it, this code using integer. Let's say अब इसमें क्या, इसमें बोलोगे हाँ जैसे ये है ना, देखो अब जो ये चीज़ है ना, ये जो इंटीजर वगैरह है, ये इंटीजर ये स्टैक में स्टोर होता है। अगर अब तुम बोलोगे भाई प्रिंट ln, तुम बोलोगे कि x कैसे प्रिंट हो रहा है ना, बोलेगा कि भाई x कैसे प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो हमने क्लोन किया था, यहाँ पे क्लोन की क्योंकि ये चीज़ ना स्टैक में स्टोर होता है ना, तो ये जो क्लोन वाला फंक्शन है ना, ये इनमें डिफ़ॉल्ट ही होता है, तो हमें डॉट क्लोन कॉपी करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये वाला सीन है, इसमें देखो लिखा भी होगा। क्योंकि इनका साइज कंपाइल टाइम में पता हुआ है, क्यों? क्योंकि स्टैक में स्टोर होते हैं। सो कॉपीज ऑफ एक्चुअल वैल्यू आर क्विक टू मेक, सो दैट मीन्स देयर इज नो रीजन वी वांट टू प्रिवेंट एक्स फ्रॉम बीइंग वैलिड आफ्टर। सो ठीक है, रस्ट तो मतलब ये रस्ट में इंटरनली हैंडल हो रखा हूँ कि अगर जो स्टैक पे स्टोर होता है उसको क्लोन करने की जरूरत नहीं है व्हेन वी आर ट्राइंग टू कॉपी दैट वैल्यू। कॉल्ड द कॉपी ट्रेट, मतलब क्लोन नहीं है, कॉपी बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब कॉपी ट्रेट मतलब समझ लो कि फीचर है। अब ये देख ले किस किस में कॉपी होता है, मतलब ये भी जो पहले बताए स्टैक पे होते हैं सारे, बूल, फ्लोटिंग वैल्यू, कैरेक्टर हो गया, ट्रिपल्स, ट्रिपल्स मतलब ये फिक्स साइज का होना चाहिए तभी। अगर लेकिन ट्रिपल में i32 स्ट्रिंग होगा ना, क्योंकि स्ट्रिंग तो हीप में होता है i32, तो फिर नहीं होगा ये। ठीक है, अब क्या कि जो टेक ओनरशिप है स्ट्रिंग ले रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट टेस्ट करवाने की कोशिश करूँगा ना तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अब जो इसकी वैल्यू है ना इसमें ट्रांसफ़र हो गई और एस पॉइंटर है ना वो हट गया। अब यहाँ पे देख, मैं कॉपी है, ये इंटीजर है, लेकिन अब दोबारा इसके बाद भी प्रिंट करवाने की कोशिश करूँगा तो प्रिंट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टैक पे अवेलेबल है और इसमें कॉपी है। ठीक है समझ गया। भाई दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो, मतलब सही है, मेरे तो समझ में आ गया वैसे तो ओके। ठीक है, चलो अब समझते हैं इसको। अभी ये अपनी जो भी हमने समझा ना, अब इसमें करता हूँ। तो अच्छा, हमें वर्क करना है। देखो ये स्ट्रिंग है, हिप पे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लोन करना पड़ेगा। तो अब चल जाएगा ये। ठीक है ठीक है ठीक है।
अरे हाँ, ये तो चाहिए। अब कह रहा है गिव ओनरशिप। एस, ओके। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, एस हुआ है, तो अभी ये क्या रहा है, प्रिंट हो जाएगा ये, क्योंकि ये जो इसकी रिटर्न वैल्यू है ना इसमें आ जाएगी। लेकिन एरर क्यों दिया इसने? अबे हाँ, क्योंकि ये सिंगल है ना, मैं इसी को बाइट्स में कन्वर्ट करूँगा तो हाँ सही है, क्योंकि डाटा तो एक ही पॉइंट आउट हो रहा है ना, तो हटाओ इसको। ठीक है। ओके, फिक्स द एरर विदाउट रिमूविंग एनी कोड। ठीक है भाई, इसने इसको ले लिया। ठीक है, प्रिंटर एन एस। ओके, काम कर सकता हूँ, डॉट क्लोन कर देता हूँ। यार ये समझ नहीं आ रहा, बॉक्स वॉक्स। यहाँ पे पॉइंटर, आई मीन इसको रेफर करना। पता है भाई, ये नहीं आता मुझे। ओनरशिप है। तो
देख लेते करके, ये तो भाई देखना ही था, मैं तो समझ में भी नहीं आ, अरे सही तो क्या हुआ ऐसे तो, ऐसे तो नहीं किया, वेट, अरे हाँ, अरे यार इसमें करना था, ठीक है। यार तो इसकी चीज ना, ठीक है। चलो कल करते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है गाइस, we'll do tomorrow. I will be live on tomorrow. I'm feeling a little bit sleepy, also little bit bored right now, but I brushed up my, like say, rust ownership as well. So yeah, little step, but it will benefit us as well. पता होगा। चलो ठीक है गाइस, आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ, ओके, सो बाय, शब्बा खैर, कैलाश खैर, गुड नाइट। आई एम फीलिंग वेरी sleepy right now. I know it, one of the most boring uh, stream you have watched right now. Thanks, bye, good night.